बस इतना ही है। सुनिए अब हम शेर सुनाने लगते हैं। क्या बात है। सुनिए अब हम शेर सुनाने लगते हैं जितेंद्र जी, यानी दिल के राज यानी बताने दिल लगते के राज बताने लगते हैं। हैं। जब भी उनकी याद के घुंघरू बजते हैं, जब भी उनकी याद के घुंघरू बजते हैं, फूल महकने पंछी गाने लगते हैं। वाह क्या वाह बात है। वाह। और शेर सुनिए, हैरत है यहाँ लोग प्यार से मिलते हैं। हैरत है यहाँ लोग यहाँ रोज प्यार लोग प्यार से प्यार मिलते से हैरत है यहाँ लोग लोग प्यार प्यार से से मिलते हैं। इस नगरी के लोग पुराने लगते हैं। पुराने लगते हैं। क्या बात है। क्या बात है। नगरी के लोग पुराने लगते हैं। कर्मों का फल यूं जीवन में फलता है। कर्मों का फल यूं जीवन में फलता है। एक दाने में कितने दाने कितने दाने लगते हैं। बहुत एक दाने में कितने दाने लगते हैं। यहाँ बेटियों माँ बहनों की इज्जत है। इस गांव के लोग सियाने लगते हैं। बहुत अच्छा इस बहुत गांव के लोग सियाने लगते हैं। हाँ लाख जतन से मिलकर जिन्हें पिरोया था, हाँ बिखर गए माला के दाने लगते दाने हैं। लगते हैं। और शेर हासिल है, हाँ जी जी। मंदिर मस्जिद जाने वाले अक्सर लोग हाँ। मंदिर मस्जिद जाने वाले अक्सर लोग अक्सर मंदिर मस्जिद ढाने लगते हैं। बहुत बहुत बकर बखरा शेर था। दोबारा हो जाए। मंदिर मस्जिद जाने वाले अक्सर लोग अक्सर मंदिर मस्जिद ढाने लगते हैं। और शेर है जी, मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, बात बात पर गाली देकर बात करें। क्या बात है। बात बात पर गाली देकर बात करें, ये लाहौर के यार पुराने लगते हैं। लाहौर के यार पुराने लगते हैं। अपनी गली में कुत्ते शेर भी होते हैं, बाहर जाकर पूंछ हिलाने लगते हैं। तेरी आंखें बातें करती रहती हैं, मुझको इनके बोल सुहाने लगते हैं। जब कोई सयाद चमन में आता है, जब कोई सयाद चमन में आता है, पंछी देश पर आए जाने लगते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सुभान। तो तजिंदर जी ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। सर मैं पिछे जो कुछ हालात रहे, रब ਨੂੰ थोड़ी शिकायत की सी एक दिन। अच्छा, तो रब ने शिकायत है जो नाम ਤੋੜਦੇ ਬਾਅਦ सारे ही कर दो हजूर। तमाम उम्र गुजारी तलाश में तेरी। वाह, तमाम उम्र गुजारी तलाश में तेरी, छुपा हुआ है मेरे दिल की धड़कनों में तू। तमाम उम्र गुजारी तलाश में तेरी, छुपा हुआ है मेरे दिल की धड़कनों में तू। पुकारता रहा मैं आरती आजानों में, वाह, पुकारता रहा मैं आरती आजानों में, मैं भूल बैठा कि इंसानियत तेरा घर। वाह, वाह, मैं भूल बैठा कि इंसानियत तेरा घर है। हजारों पोथियां लिख डाली शान में तेरी, तुझे परमात्मा अल्लाह और खुदा जाना। वाह, तुम्हारे नाम पर कर डाला कत्ले आम यहाँ, तुम्हारे नाम पर कर डाला कत्ले आम यहाँ। भजन सुने पढ़ी नमाज सुबह शाम यहाँ। वाह, कोई अपने को कहे बेटा कोई पैगंबर, वाह, कोई अपने को कहे बेटा कोई पैगंबर, पैगंबर। कोई कोई तो यहाँ ब्रह्म बना बैठा है। वाह, कहाँ तू सो रहा है कमली वाले मुझको बता, कहाँ तू सो रहा है कमली वाले मुझको बता। तेरे जहान में इंसान परेशान यहाँ, बहुत जी, वाह, वाह, वाह। तेरे जहान में ਬਹੁਤ इंसान ਬਹੁਤ ਖੂਬ परेशान। ਜੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਰੀਲੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਤਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ ਜੀ ਸਰ, जनाब, क्यों नहीं? ਇਹ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, ਚਮਨ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ये मेरी बदकिस्मती है। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ। हाँ जी, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ। अच्छा, हाँ, ਛੋਟੇ ਵਹਿਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ मैनू समा ਮੈਨੂੰ देना। ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। वाह, क्या बात है। क्या बात। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। हाँ, हाँ, ਨੇਰੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਗੁਆਚੇ ਪਲ, जी, मेरे से लब रहे ਨੇਰੇ ਚੋਂ गुआचे ਲੱਭ पल। ਰਿਹਾ ਗੁਆਚੇ ਪਲ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ क्षमा देना। क्या बात। ਨੇਰੇ ਚੋਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਗੁਆਚੇ ਪਲ, वाह, वाह, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ क्षमा देना। खूब है जी। ਹੋ ਕੇ ਹਾਵੇ ਦਰਦ ਤੇ ਹੰਝੂ, ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇਣਾ। वाह, वाह, और पुला की है ना गमा। ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇਣਾ। ਤੋ ਹੋ ਕੇ ਹਾਵੇ ਦਰਦ ਤੇ ਹੰਝੂ,
ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੈ, ਬਿਰਛ ਕੋਈ ਬੜਾ ਘਣਾ ਦੇਣਾ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਿਰਛ ਕੋਈ ਬੜਾ ਘਣਾ ਦੇਣਾ, ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਹਯਾਤੀ ਦੇ, रुख होंदे ने ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਤ ਹਯਾਤੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੀਆਬਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, बना दे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਇਹ ਬਿਰਖ ਫੈਲੇਗਾ ਬਹੁਤ, ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ ਦੇਣਾ, तड़ा दे। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਖ ਫੈਲੇਗਾ ਬਹੁਤ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਣਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕਹੋ ਸਾਵਧਾਨ, ਜੋ ਕਹੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ, ਜੀ, ਜੋ ਕਹੋ सावधान हो। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ। ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣਾ की ਦੇਣਾ, बना दे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਬਰੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਜਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਜਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਣਾ ਦੇਣਾ, कोई वधिया देना, क्या बात है। ਜਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਣਾ ਦੇਣਾ, ਦੇਣਾ। ਪੱਥਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਦ ਰਾਹੀ ਦਿਓ, ਪੱਥਰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਰਦ ਰਾਹੀ ਦਿਓ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ बना ਦੇਣਾ, देना। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ, ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਦਰਦ ਕਈ ਮਣਾ ਦੇਣਾ, बना देना सही। तो मकता है कि एक कतरा ही ता है साथी, मरे ता मौला सागर बना देना, सागर बना देना। एक कतरा ही ता है साथी, मरे ता सागर बना देना, ਬਹੁਤ बने ता मौला सागर बना देना, ਸੁਖ ਬੋਲੋ ਜੀ। कि कुछ कहण दा मैनू समा देना, फिर तुसी जो चाहो सुना देना, वाह जी और तुसी हुण जो चाहो सुनाओ। मैं दो छोटे छोटे शेर से अर्ज कर रहे हाँ हैं जी, इरशाद। कि शायर लोग बदनाम ने कि शराब पी के लिख दे रहे। हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, हाँ, कुछ जो पीकर शराब लिखे। जो पीकर शराब लिखते हैं, बह कर बेहिसाब लिखते हैं। वाह, बहुत बहुत खूब, बह बह कर बह बेहिसाब कर लिखे। बेहिसाब लिखते हैं। हाँ, होश लिखने का गो नहीं होता, होश लिखने का गो नहीं होता, फिर भी मेरे जनाब लिखते हैं। वाह 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 वाह, कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, बहकर बेहिसाब लिखते हैं, वाह वाह, होश लिखने का गो नहीं होता, फिर भी मेरे जनाब लिखते हैं। हाँ जैसा जैसा खमीर उठता है, हाँ, जैसा जैसा खमीर उठता है, अच्छा लिखते खराब लिखते। वाह वाह, जैसा जैसा खमीर उठता है, अच्छा लिखते खराब लिखते हैं, जिंदगी को मजाक में लेकर, हाँ, जिंदगी को मजाक में मजाक में लेकर जिंदगी की किताब लिखते हैं। बहुत कुछ जो पीकर शराब लिखते हैं, बहुत कर बेहिसाब। बहुत अच्छा ਤੇਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਵੰਡਰਫੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਹੋ। जो मैं जमिया जगराओं से ਜੰਮਿਆ ਜਗਰਾਓਂ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਾਗ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗਾ। बहुत नहीं, अच्छा। दरअसल की एक कारज तो पंजाबी बोली जैसी माँ, मेरी माँ की जबान पंजाबी है तो मेरी भी पंजाबी है। ਜੀ ਸਹੀ, ਬਿਲकुल ਸਹੀ, ਬਿਲकुल। तो फिर वो जाहिर गल है कि एक टाइम सी जो घर पंजाबी बोलता सी, बाहर अंग्रेजी बोलता सी, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, हिंदी बोलन का तो कोई वक्त ही नहीं सी। तो मेरी पढ़ाई भी पंजवीं तक गुरमुखी च सी, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, पंजवीं के बाद अंग्रेजी च सी। ठीक है। तो वो मैं हिंदी एज ए सब्जेक्ट ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੀ ਕਿ ਭਈ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਐਮਏ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਔਰ ਉਰਦੂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਚਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰ ਚਮਨ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ। हाँ जी, मैं इदा करदा जी, थोड़ा क्यों पंजाबी हैं ਆਪਾਂ ਨਾ, ਹੂੰ, ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਮੜੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੇਜਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਰਸ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਦਮ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਦਮ ਆਵੇ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਜੀਵੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ, ਪੰਛੀ ਹੈ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੇ ਨਾ ਗਾਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ,
और ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਮਾਰ ਉਡਾਰੀ ਦੂਰ ਗगन ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ इसकी ਗਰੰਟੀ कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨਾ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਅਕਸਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्या बात है। ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਵੇ तेल ना पावे जी कोई कोई गारंटी गारंटी नहीं। नहीं। ਔਰ ਨੇਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾਵੇ ਨਾ आवेगा। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਨਾ ਖਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ बड़ी तर्ज कसी है जी। क्या बात। ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈ ਮੌਜੀ ਸ਼ਾਇਰ हाँ। ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈ ਹੈ ਮੌਜੀ ਮੌਜੀ ਸ਼ਾਇਰ। ਸ਼ਾਇਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ इसकी कोई गारंटी नहीं। हमारी नहीं है। जनाब। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਮ ਜੀ ਜਨਾਬ ਹਿੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ ਚਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋਣ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਪਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ सर जितनी भी भारतीय भाषाएं हिंदी पंजाबी बंगाली सब वो जहाँ तक लिखने का सवाल है वो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स के साथ है आपको शायद ही हिंदी में तो कम से कम नहीं है शायद ही कोई ऐसा बच्चा भारतीय भाषाओं का साहित्यकार मिले जिसका जन्म यहाँ हुआ है बिल्कुल वही बात मैं है ना जी तो है नहीं तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर सर्टेन टाइम हमारे यहाँ जो भारतीय भाषाएं हैं वो यहाँ बोली तो बनी रहेंगी लेकिन साहित्यिक भाषा जो है उसका अकाल इसलिए पड़ेगा कि बिकॉज इन सारी देशों में अब इमिग्रेशन लॉज टाइट हो रहे हैं तो पहले क्या था कि आप 50 साल पहले आए कोई 40 साल पहले आया कोई 30 साल पहले आया कोई 20 साल पहले आया उन सब का साहित्य और भाषा में इंटरेस्ट था रुचि थी अब जो लोग आ रहे हैं कोई आईटी का है कोई इंजीनियरिंग का है कोई सॉलिसिटर है तो उन लोगों का साहित्य में वो होगा और बात को और मुश्किल है सॉरी मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम खत्म हो गया है बहुत अच्छी बात आपने कही अभी भी मैं कनाडा जाके आया हूँ कनाडा में क्योंकि नई इमिग्रेशन हो रही है आए दिन इसलिए वहाँ थोड़ी देर और ये जो भाषाएं हैं वो रहेंगी ठीक लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शायद बदकिस्मती से जो परहैप्स पूरी तरह से तो नहीं मर सकती नहीं लेकिन जो फोनेटिक्स में हमेशा जिंदा रहेंगी जी जिसे Anyway, जिसे तेजेंद्र उर्दू जी, में जल्दी मैं ख़त्म करता हूँ सौती एक जो आवाज़ की दुनिया है जो गीतों में जिंदा रहेगी ज़ुबान तेजेंद्र शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए आई एम सॉरी कि टाइम की कमी की वजह से पूरी बात बहुत सारी बातें नहीं हो पाई लेकिन फिर हम मिलेंगे चमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई प्रे कि आपकी सेहत अच्छी रहे और यू आर 80 यू विल लिव अप टू 180 बहुत बहुत शुक्रिया क्या बात साथी जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया दोस्तों फॉर वॉचिंग और आई विल सी यू नेक्स्ट वीक एट 9:30 ऑन वेडनेसडे ऑन MATV ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਬ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਵਿਦ ਹਰਜਾਬ
Namaskar, welcome to Chai Chat with Lavina. Chai Chat is in its second season, and in this season we are bringing on the table the issues that affect you and me. We are also bringing on the table not only your voices but also the voices of the people who can bring about some changes in the society and in the way these issues affect us. And today's Chai Chat is in Heathrow, Madhu. Madhu's Heathrow is known for its Punjabi cuisine, North Indian cuisine with a Kenyan twist. And what awards has it won? How many awards has it won? And specifically it is known for its Robata grill. Come on, let's meet our panel and get to know what are we going to talk about today. Every week, about 2.5 million people have curry in Britain, and this makes it a 3.5 billion industry, even bigger than the British film industry. But this industry has been in crisis thanks to the tightening of immigration rules on bringing chefs from abroad. The recession didn't help either, but why are we still in crisis despite the fact that there have been a scheme to address this issue? Are we still in crisis is the question that we ask on Chai Chat, and how has the scheme done which was brought about by the government to address this issue? And today we have a very, very distinguished panel. But before we start this, I must thank Sanjay Anand, MBE, the chairman of Madhu's, who has hosted Chai Chat. Thank you very much, Sanjay, for having us here today. And we have a very distinguished panel to discuss this issue. We have Sanjay, as we said before. We have Ms. Pavni Reddy, who is the managing partner of Zaiwala Company Solicitors. We have Luke Bryan, who was MasterChef 2013 semi-finalist and also now cooks curry at Banaras. Fantastic. We have Martin Christian Kent, who is the executive director of People's First, a charity that works with the Hospitality Guild. We have celebrity chef Cyrus Todiwala, chef proprietor of Cafe Spice Namaste, and Justine Ali, the director of British Curry Awards. They say the Oscars of curry in the UK. Thank you all for joining us. Before we begin this entire discussion and debate, Pavni, can I just ask you, tell us about the rules that have put us in this crisis? Lavina, in short, the rules that have been introduced about the chefs and bringing about chefs from abroad or non-EU countries is mainly twofold. They have reduced the category of people that we could bring from abroad and minimize them to a minimum of 3 levels. And secondly, the income category, they have increased the income level that they have to earn as a chef or a head chef within the country. That has been increased. And thirdly, any chef that you would like to bring, the labour test, you have to pass. And thirdly, the income level has been increased to more than 30,000, which is making it very difficult for any restaurant to meet these criteria, if not impossible, to bring any chefs from abroad, the talents. Bringing the chefs over, Yes, so how do you cook the real Indian food? Yeah. Let's ask the two people who have really been into the business for decades. Are we still in is the industry still in crisis? Oh, it's worse than ever before. Really? It has never been worse in terms of finding chefs. And I'm talking about a reputable company that more chefs want to work for. Right. So if someone like me is finding it difficult, you can imagine the normal high street shop that only has a 50, 60-seater restaurant and they want to expand or they want to do something innovative. It's next to impossible. I mean, how many people can afford to pay 32,000 for a chef? You can only pay that to maybe an executive chef. We don't earn that kind of money in this business to start paying that kind of money. Are you firing brands as well, Cyrus? Well, I just opened a new restaurant and we are struggling pitifully. Really? And my single biggest problem is, of course, exactly what Sanjay was saying. It's about language. It's about understanding. The worst problem that I'm facing at the moment is the people we get don't even want to try the food. So how can they sell the food if they don't even want to try the food because they're afraid of the food itself? So we have a multiple
level of problems here. And it's just not about training and being able to do it. It's about having to take people from the wider EU. Yes. And they come with issues of their own. So language is a big problem. But another big problem that has cropped up, and Sanjay is very rightly in pointing out about shortages, is poaching. So now, for a very small extra salary, staff are being poached from one place to the other. And they will move because there's a lure over there, another place. But once they tasted that movement, and once they taste a slightly higher salary, they are attracted to switch very often. Now that will take us to Luke, who actually is a British chef. And do you think within the restaurant industry that you work in that you face or you see crisis there, or you see boom there? At the moment, in the restaurant I'm in, right in the middle of central London, around lots of other French restaurants, all European restaurants, I see a booming hub of people wanting to eat, try and learn about Indian food. And these are British and all sorts of British, people. Arabic, from all walks of life. Yeah. They eat at Benares. And they eat a lot at Benares. So these are chefs, that like Cyrus was saying, that we find people who are not Indians and who don't even want to try the food, but probably are there I think for it's the job. referring to customers. Yeah, I'm referring to customers, but on the others, with the employees, we have lots of French and Spanish front of house workers, and they're just as passionate about trying the food. I mean, we only serve Indian food as staff food, and they're just as passionate about trying it and learning from what I've seen. Before that, I would like to come to Justin. Justin, you are the sort of an umbrella. You also run a magazine, and you do British Curry Awards. Tell me an overview of this whole umbrella of restaurants. Are they suffering or not? Definitely. My father launched the British Curry Awards. He founded it, and the idea was to glamorise our industry, to attract the youngsters, because in our culture, any youngster my age or my younger brothers, for example, everyone pushes them to become a doctor, become a lawyer, they see working in a restaurant is not as glamorous. And the idea of, we encourage people, even young girls, young boys that come into this industry is fabulous. But the problem is the back of house. No one sees the chef as glamorous as it is. They may say, this is hard work, this is tough, and they simply don't have the skills. My brothers, they run the front of house and they enjoy it, but we have the difficulty to expand our restaurant. We can't. We don't have the facility to get the chefs from Bangladesh, and that's where difficulty lies. And every year, through our magazine, Spice Business, we see restaurants close. They can't handle to carry on opening restaurants or continue because they've got a shortage of staff. Okay, so we do here have a consensus in some way saying that there is a crisis which still continues, where we have one person saying, no, there is a little bit of boom. There are people who are trying, are happy to try, and more people are ready to come in, but they are not taught. I think definitely if people are taught, they will see the passion that I have. And they will Sanjay, give if people go out, Look, more people need to go out and about. There are 8,500 plus Indian restaurants in the UK. Yeah. We're talking about real top brass there. We're talking about Benares. And we're talking about one man in Benares. So how does that represent what's going on out there? Now, that brings us to Martin, of course. Martin, please tell us about this scheme and then tell us how has it done. I think the scheme started quite a while ago in terms of the thinking around it, and partly with the previous government. We knew that they were looking at changing the immigration rules and tightening it up through the Migration Advisory Committee. So actually a group of employers came together to say, okay, what do we need to do? How are we going to find a system? Because we knew effectively we're starting from a standing start. As Colin said, we have got 15,000 chef students coming out of college every year, but they do specialise in Anglo-European cuisine. And while they do have some awareness of Asian Oriental cuisine, it's very limited. So we knew we were having to start from scratch. As Cyrus said, we also knew there were some clear lessons from what had worked and what hadn't worked previously. And one of the things we fundamentally knew we had to do was integrate this solution within the college framework and within providers, so it really had that sustainability, because we knew we were going to be in this for the long term. I think it's worth also pointing out, given we were starting from a standing start, we knew this was going to take a while. And that was always a challenge and always a concern for the employers from day one, that actually turning the tap off upon the immigration
was going to affect them pretty quickly, but at the same time this was going to take a while to really sort of snowball, so it actually had an impact on the industry. So what actually was created was centres of excellence. We're going to take a break, also take a break and have a little bit of stuff on our plate, and we're going to come back. Please don't go away. Call India Landlines and Mobiles for only 1 pence per minute when you buy the UK plan. Get 500 minutes, unlimited text, 1 GB of 4G data and free unlimited calls between Leica Mobile UK for just £10. Don't miss out on this fantastic offer. To buy the UK plan, text the code 11044 to the number 3535. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile, call the world for less. हाय, मैं हूँ मोना। अगर आप जानना चाहते हैं ये साल आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर, करियर को लेकर या फिर 2013 आपके लिए क्या चेंजेस लाने वाला है, तो देखना मत भूलिएगा अक्षर ज्ञान ओनली ऑन MATV। यही है पन्नालाल जोहरी के वारिस, इनका नाम एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट क्यों? यहाँ कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? अभी ईद आ रही है और वो अपनी ईदी लेने जरूर आएगा। Chai Chat. I did try to do the maths and I've miserably failed. As such, I've failed in maths every time. But obviously, as Sanjay pointed out, we have 10,000 restaurants we're looking at, and since 2012, since this immigration rules came in, we have had 70 people who have been trained. Now, why only 70, Martin? I think some fundamental problems that we've encountered, and I think some of those we knew, the industry discussed when we started this. One, we knew actually as an industry, it's never been perceived as a career destination, partly because it's always recruited abroad, it's never needed to recruit in the UK. There's also issues, cultural issues, some of them we've talked about, in terms of some of the barriers that actually, different languages are spoken in the kitchen, the ingredients are probably in different languages. And it smells too much. I'm sure it smells delightful. I think that's definitely an advantage. I'm not getting any smell here. I think, but it is overcoming some of those barriers. And I think the challenge we've got, actually, if it was so difficult during a period where there were high unemployment, and clearly since then, fortunately, unemployment has dropped, actually it really highlights the challenge we have as an industry, that we've got to attract people. But I think it's worth pointing out the broader picture. Within hospitality as a whole, we need chefs. We need 72,000 more chefs coming in by 2020. There's huge expansion, and actually it's one of the biggest skill shortages facing the whole of the industry, not just Indian restaurants or Bangladeshi restaurants, the whole of the industry. So actually it's a bigger problem, but it's a particular problem for Asian Oriental businesses because of the immigration gap and the fact it's never been perceived as a career destination before. Two things that come here to my mind, and it is open to everybody. Is it that people are not coming forth to take to be or become chefs or be the part of the apprenticeship team effort? And are you getting enough support from the industry? And what is the industry feeling about this initiative? Will this be a long-term solution at all? Because we agree that there is a gap at this point in time, which all of you are feeling. I just hope that there's quite a lot of restaurateurs watching this program, because my message out to them is this, that they must stop discouraging their own children to join the business.
My son has joined my business. I did not discourage him. But his mother wanted him to go to uni, and she was in tears. Why is he not going to uni? And I said, let him do what he wants to do. I asked him, what do you want to do? He says, Dad, I want to do what you're doing, because I never discouraged him. From the age of 14, he used to come and help. And then by the age of 16, 17, he wanted to become full-time. Now he's a successful guy, but I started him right at the bottom. So he started cleaning, cooking, kitchen. He did it from the bottom like I did. And he knows everything about the trade today. The problem we have is within the industry firstly. We have this scenario where they say, oh, it's too much hard work. It's a hard slog. We've slogged all our lives. We don't want you to go into the same pot. So well, the make it more professional. We need to become more professional. If our organization is more professional, then it won't be looked at as being a substandard job. Agreed? Very true, because what happens as an industry, we have never set the right examples. You look at all the French chefs, somebody within the family joins the brigade. What happens within our culture is we treat hospitality as a second-grade profession ourselves. Okay, we treat it as a second-grade profession, so we've never motivated our young people to look at it as something that if we as individuals have built our business, that they can lift it and take it to another dimension. And there is adequate scope for them. There is massive scope for them. We are going to take a quick break and say, at the point where we have all agreed that there is a gap and this needs to be addressed specifically in this industry, because this is a thriving industry and this has to be addressed from the immigration point of view. We're going to come back and quickly talk on that issue and take a vote on how we can do that. Stay with us. Call India Landlines and Mobiles for only 1 pence per minute when you buy the UK plan. Get 500 minutes, unlimited text, 1 GB of 4G data and free unlimited calls between Leica Mobile UK for just £10. Don't miss out on this fantastic offer. To buy the UK plan, text the code 11044 to the number 3535. For your free Leica Mobile SIM, visit leicamobile.co.uk today. Leica Mobile, call the world for less. हाय, मैं हूं मोना। अगर आप जानना चाहते हैं ये साल आपके लिए रिलेशनशिप को लेकर, बच्चों को लेकर या फिर करियर को लेकर कैसा रहेगा, देखना मत भूलिएगा अक्षर ज्ञान ओनली ऑन MATV। आज्ञाकारिणी सदाचारिणी साड़ी धारिणी पति पुजारिणी परम पावनी षड्यंत्रकारिणी ग्रह विनाशिनी सास विरोधिनी ड्रामा कारिणी। बहुओं के प्रकार हैं हजार। हर चैनल की बहू को देख सकते हैं आप सास बहू और बेटियां में, सिर्फ आज तक पर। स्काई 818 पर देखिए आज तक। इस कुत्ते को मार, कुत्ते को मार, अक्षय कुमार। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ये कुत्ता बोलता है, सुनो, एंटरटेनमेंट इनको बताओ। आज स्टॉक मार्केट में क्या बढ़ गया? देखा, भाव बढ़ गया। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। Too much fun.
Welcome back. We are discussing curry crisis in the UK, and we have decided that we are all in agreement that there is a crisis which is continuing, and there is a gap. Industry might be doing, the government might be doing stuff, but still there is a gap that exists. Do you think, from the immigration point of view, anything that can be done? If they could, instead of just putting these big bans on the chefs and then reducing the shortage list, if they can maintain a category to say that we'll give you about 5 years or 6 years, so they give the time to the industry to prepare for that shortfall. There is a supply and demand. If you can create a time gap and say we will give you, say, 5 to 6 years time or 7 years, and within that time prepare yourselves, that might actually address the issue, in my view. Okay. Now, yes. Sorry. One more very important issue, because what happens is that during the MAC committee meetings, one of the things that they always try to highlight, and Martin was in the meetings with me all the time, is that the industry is doing nothing to upskill. So, to solve that problem in the minds of the ministers that make the decisions, is why have we not put an onus on an employer that is bringing 3 chefs in there? Listen, you've got 3 people in. At the moment they don't speak English. Within 2 years that man should be conversant. Right. You will make sure that he goes for various training programs. You will make sure that there is a local person employed so that he can be skilled as well. And if we start putting that little bit of onus on an employer, the employer will be committed towards further training. At the moment, everybody is working in a crisis. Okay, so we are grabbing somebody from here, putting him there, bringing him from there, putting him there. And what is happening is that the young person, when he comes into in a kitchen that is working in a frenzy, he loses hope. Right. So if you want to do that, if you want to make sure that this industry is training as well, put a little onus on the employers. Where any well-meaning employer who wants to import staff from the subcontinent of India will be more than happy to say, yes, I will invest in the training and development of my people. And if we start putting that little bit of onus on an employer, the employer will be committed towards further training. At the moment, everybody is working in a crisis. Right, that's very, very interesting point. I will take that question to everybody very quickly to address this issue of short-term gap that we have, which is affecting the growth of industry. What can be done? I do think homegrown chefs, it can work, but at the end of the day, it's still going to be long-term. We need a solution now. Otherwise, the fear is restaurants will close down. What is that solution? We have to look at ways of teaching our youngsters to change the cultural gap. We have to look at, this industry is glamorous. We have to look at getting role models that are celebrity chefs and show them that this is a great industry to be part of. We have to, encourage all the other students as well, that this is, students currently, they come and go, they don't stay in it. We have to look at ways of encouraging them to stay in this profession and see how far they can. So a lot of cultural changes that you have to do within the industry. Martin, Saras, do you have to add anything to that, or that was? Well, I mean, long-term solution, yes. The Asian sector does have an issue with cultural changes. But the short-term issue needs to be looked at. The long-term solution needs to be focused, and it needs to be driven. So cultural change, better training modules. Get the professionals involved. Professionals involved, this is called for you. Martin. I would agree with everything that's been said. I mean, the other thing in the long term is the industry speaking with one voice. I think it's very easy to see different cliques, different chef groups saying different things, lobbying differently. It's actually not helpful for the industry, and actually everybody coming together with one voice to actually support what's going on. And there's no silver bullet, it's a multitude of different things. However, in the short term, I think it's about redefining what we mean by skills. I think there's a real perception that chefs are not skilled. And I think as we can see today, they clearly are. And actually it is going to take time for something to become that skilled, to replace and to grow the sector. So, in the short term, it's got to be looked at afresh for this type of Asian chef to ensure actually we can help sustain the industry in the short term as we invest for the future in the long term. Okay, so cultural mindset change, module, better training, and you said that the industry has to be united as well, in addition to everything else. As I said, it's the perception that has to change. For example, even in the legal industry, as I was talking about, Zaiwala and Company, our firm, people would say when they see the name Zaiwala, that means Indian name.
And yes, the level of work that we kind of do, because we were the first ever Indian law firm in the City of London, and when they see our name, they say, "Ah, it's curries. I love Indian curries." So it's a kind of, you know, they add the name to the food immediately. That kind of brings how lovely, you know, the industry has actually evolved itself. Yeah. The major issue right now is that they really, basically, they could have just said to everyone, no more chefs. They've left that little window open. Yeah. Who's got money to give £32,000 to a chef, unless it's an executive chef? Well, you can only have one in your restaurant. Yeah. How many are you going to have? So the point is that until they relax the immigration laws, this industry is not going to flourish. So at this point in time, we should have an immigration relaxation and the onus to be given to the people like you to say whether you can yourself teach them English and whatever the other requirements are. So immigration relaxation has to happen, a window, 5 years, 4 years, 10 years, whatever. And second, from the government point of view, I think the modules, the training modules have to be focused and more maneuvered, if I can say, to better standard, to the better industry standards. From within the industry, of course, we have culture issue that needs to be addressed, and also the mindset that needs to be addressed, and more involvement from mentoring. Thank you very much. Thank you all. So to the government, wake up. The industry, the curry industry needs your help. Lavina Tandon signing off for Chai Chat. Please join us next week as well. जादू 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 Hi, I'm Rakesh Roshan and you're watching me on MA TV. That'll be $4.99, ma'am. There you go. Thank you. And have a great day, ma'am. Well, what about my change? What can you get with 1p? A call to my mum who lives in India. You don't believe me? Mum! Hi, beta. How are you? Call India landlines and mobiles for only 1 pence per minute. Order your free SIM at likeamobile.co.uk today. प्यास बुझा लो ए भक्तो इस युग में बस राम यही है इश्क मोहब्बत प्यार यही है इनका भी पैगाम यही है। षोडशोपचार पूजा क्या होती है, हवन क्यों करते हैं? पिछले 5 वर्षों से हिंदुत्व के साथ जुड़े इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने का श्रेय जाता है हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र श्री ब्रिजमोहन गुप्ता जी को। हिंदू धर्म क्या है? इज इट ए वे ऑफ लाइफ? ओम का क्या महत्व है? हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति और हिंदू रीति रिवाज को जानने के लिए आइए, देखिए, लेट अस टॉक हिंदुइज्म। गुरु प्यारी साध संगत जी, आप जी ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰੋਡਵੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। MA TV ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 793 ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ 0208 571 3926। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अभी ईद आ रही है और वो अपनी ईदी लेने जरूर आएगा।
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles et messieurs, bienvenue na Welcome TV. Balobi Welcome TV, karande na bengango, chaîne ya Banamboka, balobi chaîne ya liberté d'expression, oe kambami na moumbu na Nzambe, pasteur bienvenu Messalin. Alors lelo to eko ebisabino que to sengi na bato nyonso boko ma ba friend ya Welcome TV. Soko komi friend ya Welcome TV toche babiloko ya sika ebele soko lingo koma friend ya Welcome TV ozo pesa de 1 à partir ya 1 pound ti bolingaka ba journaliste nyonso o baleka na kati ya Welcome TV bolingaka ba pasteur nyonso o baleka na kati ya Welcome TV to sengi bino bozala ba friend ya Welcome TV. Et alors, na sengi lisusu, na lingi na informé bino ke to bandaka bémission na biso de lundi jusqu'au samedi, to bandaka partir à 14h jusqu'à 1h du matin. Donc, to baksi ba heure de 14h jusqu'à 1h du matin, bozana Welcome TV. Et alors, pasteur bienvenu Messalin, homme de Dieu, église naye, adresse nango ezana C 114 Wellington Road. Alors, bokota la adresse wana, a sengi na ba union so boza chargé, fatigué. Jésus-Christ azoloba, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez en moi, je vous donnerai du repos. Alors, to sengi na ba enyonso o bazana mikuma na bango bo rejoindre vraiment église oyo ya monene oyo kambami na mosali na Nzambe boya koyoka liloba na Nzambe bokozwa délivrance, bokozwa solution na ba problème na bino. Balobi soki ozali friend ya Welcome TV okozala toujours na half price. Soko lingo leksa émission, soko lingo sa la publicité okobana toujours kozwa half price. Baba no pesa yo half price. Merci beaucoup na ba nyonso. Ah, balobi Welcome TV. Ah, chaîne ya Banamboka, chaîne ya liberté d'expression. Vous allez toujours brancher na Welcome TV. Merci. Tata pe a mwana pe limo santu amen. Tata wa biso ozali yo likolo batu bakumisa kombo ya yo bandima bokonzi bwa yo po elingi yo basala yango ose lokola bakosalaka o likolo pesa biso lelo bilei bya mokolo na mokolo limbisa mabe mabiso lokola biso tokolimbisaka baninga salisa biso tondima masengenya te Bikisa biso mabe. Amen. Bandeko basi, bandeko babali, bakolo, pe bilenge, mbote na bino banso, gracia ya sekwa ya mokonzi wa biso Yesu Kristu, bolingi bwa Nzambe, pe bondeko bwa elimo santu, bozala na bino banso. Brothers and sisters, greetings to all of you. May the grace of the resurrection of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Ekokisi mibu tuku ibale na mitano to 25 uta tata kardena wa yambo ya ekolo Congo, Joseph Alubert, malula azongisaki molimo epa ya Nzambe. Nzokande eleki mibu tuku itano na mitano uta alobaka maloba na français. Une église congolaise dans un état congolais. Yango po ya kolobate, tango ekoki pote ba congolais bazwa ecclesia lokola ya bango moko pe basimba yango na kati ekolo ya bango moko. Yango ezalaka le 20 septembre 1959 na stade Roi Baudouin. Otango baponaki ye episkopo mosalisi wa Kinshasa otango ena Léopoldville.
maloba mana makomaki programme mobimba ya mosala mwai